So hello everyone, welcome to OASHUB. Daily current affair जदि आम डिस्कस करबा कि ऑलरेडी मु 23rd रो करंट अफेयर डिस्कस कर देइथली 24 रो करंट अफेयर पेंडिंग थिला एंड 25th रो जो हमरो current affair एते किछि इंपोर्टेंस नाही so I would not discuss that one and on the 26th that is the today and I would wish you a very happy Holi, the colorful festival. I wish a very colorful and enjoy your life. Must be colorful, must be enjoy. You must have some memories, good memories. Tamankrasu and success jaldi samastung mil jaye. Everybody should have a healthy and pleasant life. So etiki I would what pray for the Almighty Lord Jagannath. से समस्त खुश रे थांतु भल थांतु भल हेल्थ थांतु एंड सक्सेस समस्त को चलते मिल जाओ तो आज जदि हम देखा जोटा कि आम बर्तमान जो पेपर डिस्कस करूचे दैट वन्स फॉर द 24th पेपर दैट 24th पेपर किसी इंपोर्टेंस न्यूज अच्छी लाइक द इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया सो इंडिया रो जो इनकम इनइक्वालिटी जदि आम देखा सो दैट मेक्स ऑफ दैट top 1% of Indians, they're having one of the highest share of the world resource or the inequality in India. That is the what? Loaded masses with the study of the inequality. तो आम पूरा inequality ऊपर बहुत बड़ा गोटे आर्टिकल्स तुम देखी परिबो जो थे लिखा है द इनकम शेयर ऑफ द सुपर रिच और द टॉप 1% अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड कहले इंडिया रे जो टॉप 1% जेतिकी इनकम करूछंती सेमान पाखरे जेतिकी रिसोर्स अछि दैट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड दैट इज मोर देन इवन साउथ अफ्रीका ब्राजील एंड यूएसए ना क्वेश्चन अराइजेस कि ताहले whether this is happens to India or somebody else or somewhere else this has happened earlier. Now see the questions whether this scenario of that 1% of the super rich or the ultra rich Indians they experience such a high rate of what inequality. Now this does not that this is India is not exception to this phenomenon. This is economic phenomenon. Whenever any economy whenever any economy grows at faster rate or the developing, especially I will say the developing countries, the economics has a certain, I would say what, that is the peculiarities or I would say that is the inherent quality of the growth of economy कि जेतेबेले कौनसी जगह इकोनॉमी ग्रोथ होता है बहुत फास्ट ग्रोथ होता है इकोनॉमी स्पेशली दैट टू द डेवलपिंग कंट्री तो इनइक्वालिटी आसीबो ही आसीबो नो डाउट तेणु एटा कई भावनी कि हाँ आफ्रिका ब्राजिल यूएसए रे नहीं आमर कहीं एते इनइक्वालिटी तांकर भी थिला इट वाज आल्सो देयर व्हेन दे वर developing when US economy was developing that times they were also having the same even China as well हाँ तो आम देखा जदि से गवर्नमेंट लिबराल अच्छी ताले ये सिनारियो देखा बट दिस सिनारियो वुड नॉट परसिस्टेंट ये आगू को गला परे आफ्टर 20 years 30 years when economy will be developed like USA भाया जो इकोनॉमी डेभलप हो कि जर्मनी फ्रांस ये सब यूके कथा नहीं जाओ दैट टाइम इनइक्वालिटी विल ओब्वियसली कम डाउन सो दैट इज द व्हाट इकोनॉमिक हाउ इट गोज ऑन दैट इज हाउ द इकोनॉमी गोज ऑन ओके तो यहाँ समस्त को बुझा पड़ जाओ नाउ कम्स टू द आवर पॉइंट्स सो मोर ओवर द टॉप वन जदि आम देखा टॉप वन इनकम्स एंड द वेल्थ शेयर्स द हाईएस्ट हिस्टोरिकल लेवल okay at what 22.6% and 40% respectively in 2023 that means हमें कहबा कि वर्तमान से मानकर शेयर होची कि टॉप 1% of Indians they are having 40.1% of the totals that is the shares हमें कहबा wealth share देशर जेतेबेले 1900 1920s रे जदि हमें देखबा it was 1920s रे हमें कहबा और सिंस द इंडिपेंडेंस जदि आम इंडिपेंडेंस कथा तुमको नहीं देखिए ये डेटा फैक्ट्स रे कि जितेबले 1922 रे द टॉप इंडियन दैट इज द 1% ऑफ द रिचेस्ट इंडिया दे वर हैविंग 20% ऑफ द दैट टाइम 13% सॉरी दैट टाइम 13% शेयर था बट वार टाइम रे सेटा 20% हैला पुनी 13% को आसीगला इंडिपेंडेंस टाइम रे
So during the independence it was having 13%. तापर कौन है 1980s बेलू जदि आम देखा है ना पुणी से है कौन धीरे धीरे मतलब 6.1 को आसला बट जो लिबरालाइजेशन आसीगला ना दैट टाइम्स इट स्टार्टेड टू इनक्रीज. सो लिबरालाइजेशन रु जदि आम देखा कि जदि however following the liberalization of 1991 the declines of one top that is top 1% share halted and started to increase. So last 30 years jodi ame dekhiba now they have increased to what 22.6 and presently they are moving some around what 40%, that is what 40%. So historically jodi ame dekhiba total national incomes जदि आम मिडिल्स देखा मिडिल क्लास केते टॉप क्लास केते लोअर क्लास केते तो रेस्पेक्टिवली जदि आम डेटा फैक्ट्स को देखा ओके सो दैट वुड बी देयर कि कोठी ना कोठी सेमानकर वेल्थ बा इनइक्वालिटी इंडिया रे बढ़ी. सो दैट इज द व्हाट पेरिस बेस्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब्स, that is what latest paper title, the income and wealth inequality in India since 1922 to 23 almost आम के 100 years रो गोटे दिया जीते the rise of billionaire raj in India. तो इंडिया रे जो बिलियनरीज मानकर जो आम कहबा जो ग्रोथ हेची केमिति हेची तार ट्राजेक्टोरी गोटे से माने देइचंती जो थे से कहते द ऑथर रिप्रेजेंट ए लॉन्ग टर्म होमोजेनियस इनकम्स एंड वेल्थ इनइक्वालिटी सीरीज गोइंग बैक टू द 1922s एंड 1961 को आम कहीकि पूरा गोटे हिस्टोरिकल्स देइचंती कि इंडिया रे केमिति बिलियनरीज माने डेवलप होइचंती. तो ब्रॉडली एस्टिमेट सजेस्ट दैट द इनइक्वालिटी लेवल्स डिक्लाइंड जदि आम कहबा पोस्ट इंडिपेंडेंस पर धीरे धीरे आमर जो इनइक्वालिटी लेवलटा कौन है अप टू 80s जाए 1980s जाए ध्यान से शुणव 1920s टू नहीं कि 1950s जाए सिंस 1920 टू 1950 so inequality increased but 47 but once got India independence since the 1950s ru jodi ame dekhiba so 1950s onwards up to 1980s the inequality in India decreased and then 1991 रे जेतरा हमर LPG आसीगला since the LPG till date the inequality has been what on increasing trend. तो जदि आम देखा सेबेठू बढ़ी बढ़ी चलती दैट मीन्स आम जेबेठू आमर लिबरालाइजेशन आसीगला अर्ली 20s रु जदि आम देखा इंटेंसिव ग्रोथ ना कहीं तामने मु तुमको कही कि आउ टिके पूर्वरु कि जेतेबेले कौनसी देशर इकोनॉमी ग्रोथ रेट होता है ग्रोथ अधिक होता है कारण ग्रोथ डज नॉट हैपेंस एंड डज नॉट कम्स टू ऑल. जेतेबेले भाव गोटे कौन गोटे फैमिली कथा भाव कौन गोटे फैमिली जड़े वेज कि आईएएस हो गले तार अर्थ ना कि फैमिली समस्त इनकम बढ़ीगला ओके लेट्स से जड़े किए गोटे बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो गले सेमती नहीं कि समस्त होगला. सो सक्सेस डज नॉट कम्स टू ऑल इनकम समस्त आट ए टाइम बढ़े ना तेणुक कौन देशर जो जीडीपी ग्रोथ होची बा कौन गोटे ग्रोइंग इकोनॉमी होता है that time inequalities will definitely come. That is the principles of economy or that is how the economy moves on. Okay सेथिरे हमर तेणुक इनकम इनइक्वालिटी मेजर्स द व्हाट आम कहबा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू आउट द पॉपुलेशन. आमर इनकम इनइक्वालिटी रो मीनिंग कोन कहले आम देशर भाव जीडीपी है 3 ट्रिलियन फॉर एग्जांपल आई वुड से इफ द डीजी लेट्स से व्हाट जीडीपी होची हमर टोटल वैल्यू ऑफ द जीडीपी इज लेट्स से 1 to 3 trillions of the total value of the GDP. ताकू जदि हमें पर कैपिटल डिवाइड करबा केते पड़ुची जदि हमें देखिबा पर कैपिटल ले तो द फास्ट रीच जो 1% of the Indians they are sharing what 30 to 40% of the total wealth of this nation. तो कोठी ना कोठी हमें देखिया पड़ेगा इफ द ग्रेटर शेयर ऑफ द एग्रीगेट इनकम गोज टू द रिचर देन द मिडिल एंड द लोअर सेक्शंस द इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. ओबियसली इंडिया से ही होची. सो बर्तमान जदि अदर हैंड रे देखिबा द वेल्थ इनइक्वालिटी मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल नेट वर्थ. ताले देखो गोटे हैला इनकम इनइक्वालिटी गोटे हैला हमर कोन ना वेल्थ इनइक्वालिटी. वेल्थ इनइक्वालिटी हैला कोन ना किए केते टंका रखिछि. इनकम इनइक्वालिटी कहले कोन ना मिडिल क्लास केते इनकम करूछि
लोअर टोटल इनकम को डिवाइड करवा बस ये है डिफरेंस दैट इज व्हाट एटा हला तमरा वेल्थ इनइक्वालिटी सेटा हला इनकम इनइक्वालिटी सो इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया also increased हमें कहबा now income flows of what that is what flow of money such as a wage है परे wealth है परे bond है परे stocks है परे so these are the things तेणु करके आम कहवा कि कौटी ना कौटी द इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया दैट हैज गॉन ऑफ एंड स्पेशली ड्यूरिंग द फ्रॉम द कोविड आई विल से ये जो इनकम इनइक्वालिटीज एवरीवेयर ऑब्वियसली दिस इज नॉट टू इंडिया कि दिस इनकम इनइक्वालिटीज खाली जे इंडिया रे प्रिवेल करूची बोली सेमती किछि नाही दिस वन इज टू ऑल द नेशन सबु देशर अछि हाँ कोठी टिके अधिक कोठी टिके कम बट आई विल से कि इंडिया रे जो प्रकार जो रिच माने जो एबे डोमिनेट करूचंती कि ये आगु को जाई कि कमी जीव केतेबेले जेतरो इंडिया गोटे डेवलप नेशन हबो अदरवाइज हबार चांस ही नाही कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म हबो and those peoples having the money at their back they will invest and they will get the more benefit out of that एबे भाबो जो मान को पाखरे पैसा अछि से इन्वेस्ट करले पैसा पाइले अपॉर्चुनिटी आसुची इकोनॉमी रे बट जहाँ पर नहीं से इन्वेस्ट करि पारुनी इनकम ही पारुनी तो जो मान करो आदानी अंबानी जो तुम टाटा महिंद्रा कथा नहीं जाओ ओके से मान को पाखरे तो ऑब्वियसली ये तुम रहइबो एंड नो डाउट सो इंडिया बीइंग the most populous country in the world and the income distribution जदि आमे कहबा सो हमर wealth inequality and income inequality both is there तेणु करिकी जदि पोवर्टी को भी जदि आमे देखिबा until the 2000 the inequality did not receive much attention in India but 1991 रे जो लिबरलाइजेशन आसेला जो रिफॉर्म हैला ग्लोबल मार्केट जेतले आमे कहबा बे इंडिया एंटर कला नेशनल इनकम बढ़िला एंड 1% लेवल रिकॉर्डेड हैला दैट मीन्स आमे कहबा धीरे धीरे बढ़ी 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 वर्तमान हेगला 40.1% So, I mean, income inequalities, in other words, the billionaires Raj headed by the India's modern bourgeoisie, and now the inequals that is more than the what British Raj headed by the colonialist forces. तो जेतले ब्रिटिशर्स थिले तांकोठु भी वर्तमान आम देश रे इनइक्वालिटी बढ़ी गला बोली फाइंडिंग्स रिपोर्ट्स रे कहउछंती बस बस ये खाली जा स्टैटिस्टिक्स अछि आउ किछ नै तो सेम सेम के 1982 रे कोन हला 1920 बस सेम सेम रिपोर्ट को खाली आसी छी हाँ ताले इनइक्वालिटीज काहे के आसिला सेटा मु टिके कहि दिए कने इनइक्वालिटीज आसी छी एची पई बिकॉज ऑफ रिफॉर्म बिकॉज ऑफ नॉलेज रो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हिनी बिकॉज ऑफ रिसोर्स रो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हिनी बिकॉज ऑफ स्कीम्स आमे कहबा बिकॉज आगुरु जो आमे कहबा नॉलेज थिला बा जो मन पाखरे पैसा ऑलरेडी थिला से माने बेनिफिट पाइले तो जदि आमे एसबीआई रो रिसर्च कहउची हमर इंडियास गिनी कोएफिशिएंट ध्यान से देखो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ना गिनी कोएफिशिएंट यूपीएससी बहुत थोर पचारछि तले गिनी कोएफिशिएंट कोन गिनी कोएफिशिएंट मेजर्स द इनइक्वालिटी दैट इज व्हाट मेजर्स द इनइक्वालिटी ना गिनी कोएफिशिएंट एसबीआई कहउची डिक्रीज हेछि फ्रॉम द ईयर 2015 to year 2023 the Gini coefficient has decreased from 0.472 to 0.02 को कमिछि that means the reduction a significant reduction in the inequalities तो एसबीआई रो जदि हम कहबा रिसर्च कहउछि कि इंडिया रे इनइक्वालिटीज आमे कमिछि ओके एसबीआई कहउछि तांको रिपोर्ट रे ये तो प्राइवेट कना एटा तो देखो फॉरेन गवर्नमेंट ना सबले आम गवर्नमेंट को ब्लेम करूथाउ दैट डज नॉट मीन्स हु ओवर इज रूलिंग इंडिया चाहे से बीजेपी रूल करू चाहे से कांग्रेस करू जे रूल करू फॉरेन मीडियाज एंड द फॉरेन एजेंसीज एंड आई वुड से दोज आर देयर they only money minded and they plays game in favor of them I would say so likewise so India that means as we are preparing for the civil services तो हमको गवर्नमेंट डेटा वी नीड टू फॉलो इन ए बैलेंस वे तुम ताको लिखि परिबो तो एसबीआई कहउची कमिछि दैट इज व्हाट 0.472 रु 0.4 आमे कहबा 402 को आसी पहुंची बस ए रहला हमर एसेंस हमको मिल गला नाउ जदी हमें देखिबा तले फेजेस ताले आपण मतलब समझते कहबो कि हाँ ठीक अछि के फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज तो इनइक्वालिटी बढ़ी 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 जीवो तले केते जाई बढ़िबो एक कथा तो ऑथर कहि नांती बट व्हाट आई प्रेडिक्ट दिस विल हैपेंस अप टू 2035 अप टू 2035 ना 10 इयर्स आउ 10 वर्ष ई भले चलिबो
then it will decline. Why? Because there would be knowledge or dissemination ହେଇଯିବ. Everybody will have some sort of knowledge, economy knowledge ବଢ଼ିବ, wealth ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ବଢ଼ିବ, startups ଆସିବ, है ना, opportunity ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ dominate କରିକି economy ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ dominance ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, sorry, so that ଆଗକୁ କମିବ. ଯାହା ବି ହଉ, solution କ'ଣ? ଲକଡାଉନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ତ ଲକଡାଉନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଟପ୍ ସେୟାର ରିଭର୍ଟେଡ୍ ଦେୟାର ଅପୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, well the bottom declines back to the 2014 level. ତ ଆମେ କହିବା ଟପ୍ ମାନଙ୍କର ନା ଇନକମ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ବଟମ୍ସ ଆଉ ସବୁଠୁ ସଫର ହେଉଛି କିଏ? ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କହିବା କଥା. ସଜେସନ୍ କ'ଣ? ସୋ ଫାର ଯଦି ଆମେ ପେପର କହିବା ସୁପର ରିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଯଦି 40% ଆମେ କହିବା more than, and in contrast the middle class 40% seems to have grow slower than the 50. ध्यान से सुनो, this is very important. ना फाइंडिंग कहूँ फास्ट 1% से तो सुपर रिच बिलियनर हो गले, तांको ग्रोथ रेट अधिक, तापर ग्रोथ करूँ किए? बॉटम. आ जो मिडिल क्लास रो ग्रोथ रेट इंडिया रे होची सबुठु कम ना. सी ताले फास्ट जो माने रहले सेमान को अधिक, लोअर क्लास रो अधिक, सबुठु कम इनकम करूँ मिडिल क्लास. सो तो मिडिल क्लास इज द हायर आमे कहबा सफरर ऑफ दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सबुठु अधिक सफरर होची किए? मिडिल क्लास. ना जदि यार सजेशन कौन कहूँ ना पेपर सजेस्ट कि 2% सुपर टैक्स करवा रिचर्स मान जो मैंने सुपर अल्ट्रा रिच बिलियनरीज जो मैंने अच्छा इंडिया रे, जदि गोटे आम 2% सुपर टैक्स ऑन रिच मान आम इम्पोज करवा, सो दैट आमको किसी कौन ना टैक्स आमको किसी मिल जाव, जोटा कि आम नरेगा भाया आम वर्क रे फंडिंग करिपरिबा. ओके, तो यहाँ तुमको गोटे से सॉल्यूशन कहते. सेम जिनस जदि आम हियर वी विल आल्सो कम्स टू द सेम पॉइंट्स टू बी नोटेड हियर. तो आउ गोटे आर्टिकल्स आसी मुझे तुमको देखा, दिस वन आल्सो द सेम आर्टिकल्स एंड सेम सजेशन आल्सो, बस ये तुमको दिया जाइए कि नेहरूवियंस टाइम रे कौन है, तो ये तुमको दिखाई. ओके, ये सेम डेटा दिखाई, तो बस आमको आउ किसी देखिया नहीं. तो वर्ल्ड बैंक आम देखा consumption standard assessing the poverty levels, more acceptable currency among the economics, मतलब इकोनॉमिक्स मान को देखा इंडिया रे कौन है, तो अगेन आम कहवा जो ये लिखाई ना सुपर रिच टैक्स गोटे इम्पोज करा जो, राइजिंग इनइक्वालिटी बढ़ुची, हायर टाइम्स फॉर व्हाट सुपर रिच मान को गोटे टैक्स लगा जो, सेम 1992 ये सब डेटा सेम तुम रही से मुझे रिपीट करू ना. बाकी देख इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकिन बहुत हंगामा चलती, समस्त को जाना अच्छी कि है ना. एंड देख आप क्वेश्चन कौन हो पार, क्वेश्चन हो पार कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्रिटिकली एनालाइज द इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जो गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करते कि इट वाज टू फेयर आम कह इलेक्शन को फेयर स्पॉन्सर्ड करने, तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन कर कौन हो, वेदर मनी लॉन्ड्रिंग होची कौन होची कि किसी पार्टी को फेवर होची किसी पार्टी फेवर्स होनी, तार सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड कौन हो पारिबो ताकू आमे लिखि परिबा. एंड दिस वन वुड बी द क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी प्रीलिम. तो देखो यूपीएससी प्रीलिम्स लास्ट 2-3 इयर्स आमे देखिबा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत पचारुची. मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस, they are asking so much of mapping based questions, so that is why you need to remember those facts. रशिया रे आमे देखिबा टेरर अटैक्स more than 150 people died, तो ऑलमोस्ट 200 people आमे कहबा died in the Russian terror attack रे मॉस्को रे गोटे सुपर मॉल रे. So that has caused the damage and Putin जदि हमके ताप बड़ी डिस्टर्ब्स अच्छी ठीक है जब ये जो देन अपार्ट फ्रॉम दैट आम एडिटोरियल पार्ट को आसवा. एडिटोरियल जदि हाँ आउ गोटे इम्पोर्टाट जिनस ये कि इंडियंस वुमेन्स माने जो डोमेस्टिक घरे जो मैंने काम करते, तो मैंने समझते जानते कि इंडियन वुमेन्स दे स्पेंड मच ऑफ द टाइम्स इन द हाउस वाइल प्रिपेयरिंग द फूड्स, टेकिंग केयर्स ऑफ द बेबीज एंड ऑल्सो द होल घर सब कथा से मैंने बुझाती. एंड व्हाट इज द इंस्टीट्यूट्स फॉर द पॉपुलेशन साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट एंड द सोशल साइंस, ये दी जन मिसिकी गोटे डेटा पब्लिश करछंती किए दैट इज द व्हाट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन साइंस एंड द टाटा इंस्टीट्यूट फॉर द सोशल साइंस बोथ इन मुंबई. एम गोटे डेटा देइछंती कि जो अर्बान रे जो वुमेन्स माने रोचंती से माने अधिक काम करते रादर देन द रूरल वुमेन डोमेस्टिक काम है ना. अच्छा एथरे यूपीएससी क्वेश्चन कौन हम
तो एथिरे आमे कहबा कि वुमन रो वर्क फोर्स कथा तमे लिखि परिबो प्लस आमे एथिरे आउ कोन करि परिबा है ना। तो जदि आमे एथिरे आउ गोटे जिंस आमे लिखिबा कोन कि वुमेन्स माने जो आमर वर्क पार्टिसिपेशन से बढ़िया दरकार एंड एमनकर केयर इकोनोमी बोली कह जाए। हाँ ये टर्म्स टिके मन को केयर इकोनोमी विच इज नॉट काउंटेड इनटू द जीडीपी यांकर जो इकोनोमीटा जीडीपी रे काउंट हो न था बस सेटा टिके मन रख। Okay. Baki, one thing here you have to remember from the international fact is that Operation Sankalp. ध्यान से मन को ये बहुत इंपोर्टेंट ऑपरेशन संकल्प तुमको पचार ऑपरेशन संकल्प के इंडियन नेवी कोठी करूची सोमालिया कोस्ट इंडियन ओशन रे कोन पई पायरेट्स मान को चेक करिया पई टू कैप्चर दैट पायरेट्स टू अवॉइड दैट रीजन फ्रॉम द पायरेसी that is operation sankalp is going on. So anti piracy ये ऑपरेशन संकल्प कहाँ अंडर होची द एंटी पायरेसी एक्ट ऑफ इंडिया 2022 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। सो बिकॉज याको नहीं कि यूपीएससी 100% क्वेश्चन बनेबा एथरे किछि भी डाउट नहीं। द ऑपरेशन संकल्प दैट इज 100 days of the sustenance operation sankalps have what taken the myth of short and the swift operation। तो आम कहबा एबे 100 days रो ऑपरेशन जदि आम फेज 2 रे चलछि संकल्प जोटा इंडियन नेवी करूछि कोठी अरेबियन सी गल्फ एडेन गल्फ ऑफ एडेन ए सब रे एथरे ड्रोन यूज करूछंती पूरा इंडियन नेवी जमे देखबा एठी पूरा लागि छंती ऑपरेशन आम कहबा ऑपरेशन संकल्प। तो आकु नै कि क्वेश्चन हे परे एंड अदरवाइज दे कैन मेक अ क्वेश्चन फ्रॉम द एंटी पायरेसी एक्ट ऑफ इंडिया। तो एंटी पायरेसी एक्ट ऑफ इंडिया को मध्य नै कि क्वेश्चंस करि पारंती। सो दैट इज हाउ they will ask the questions from there। Okay, now comes to the circular economy of textile। This is also very important articles written by Geeta Ravichandram। ना देखा हर एसेंस मु बुझेबी सो दैट मु तुमको टाइम्स को वेस्ट करिबे नहीं बा अधिक टाइम नेबी नहीं कारण एवरीबडी इज अ सीरियस कैंडिडेट आई बिलीव सो एंड आई डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर दिस बट बिकॉज द व्यूज एते जाउनी मु देखुची के हाना विजिबिलिटीज बहुत कम रोची सो दैट is not motivating, you know। So that is why I believe ke you must have as the way or I'm putting effort, you must share this one comment as much as possible। Okay, so बाकी मु देखिए कि हाँ जमती कालीडटा जोटा मु कहली कि 25 तारिख रो जो इंडियन एक्सप्रेस थिला जोटा न्यूटा एते खास न्यूज नहीं सेते में तो अवॉइड करते डिस्कस करबिनी 24th को डिस्कशन नहीं गली एंड मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट ईच डे जो जहाँ मु कही दूची जो एरिया गुड़ा नोट बनले कौन मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव ए प्रेटी गुड कंपाइल्स नोट हो एंड यू नीड नॉट टू सर्च हियर एंड देयर फॉर द करंट अफेयर नोट्स एंड बिफोर द एग्जाम ओके यू विल हैव योर ओन नोट। सो दैट इज हियर हाउ सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आमे समस्ते कहूचे मिशन लाइफ कथा कहूचे प्राइम मिनिस्टर कॉफ 26 रे कहले मिशन लाइफ दैट इज लाइफ फॉर द सस्टेनेबल एनवायरनमेंट लाइफ मिशन लाइफ रो मीनिंग कोन लाइफ फॉर द सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कॉफ 26 रे आसीथिला समस्ते जानिछ वर्तमान कॉफ केतेटा हे गलानी 28 कॉप्स हैज गॉन ओके कॉफ 28 रिसेंटली कंक्लूडेड इन यूएई दुबई ठीक अछि। तो ये जति आमे कॉफ 28 कॉफ 27 इजिप्ट रहिथिला एंड कॉफ 26 हेथिला इंडोनेशिया पाली। तो ये सब तुमको प्रीलिम्स रे पचारि पारे लास्ट 3 कॉप्स आमे डिस्कस कले बाकी कॉफ तुम जमती कॉफ 14 कथा नहीं जाओ कॉफ 17 कथा नहीं जाओ अहमदाबाद डिक्लेरेशन कथा नहीं जाओ दिल्ली डिक्लेरेशन कथा नहीं जाओ दीज आर वेरी इंपोर्टेंट डिक्लेरेशन अहमदाबाद डिक्लेरेशन एंड दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ द कॉफ्स। तो कॉफ 14 कथा नहीं जाओ कॉफ 17 कथा नहीं जाओ दीज आर आल्सो वेरी इंपोर्टेंट कॉफ्स ओके जाबियो तो ताको मु डिस्कस कौनी ना पॉइंट्स टू बी नोटेड हियर दैट से कहउचंती के सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ टेक्सटाइल। अच्छा आंकर देखो बहुत बढ़िया आर्टिकल्स लिखिचंती से कहया कथा से चेन्नई रे रहउचंती चेन्नई रे बड़ हिचंती तो जहाँ भी हो कहले जिते मु घरे बसे केबे केबे लोक आसती कहती कपड़ा पुराणा कपड़ा दियो आउ थाली बासन सब नुआर नहीं जाओ एमिति आसे ओके आको आमे को एक्सचेंज प्रोग्राम आको आमे को एक्सचेंज। तो ये तुमने भी आमे भी केबे केबे करिथवा कि हाँ प्लास्टिक दउचे आउ गोटे प्लास्टिक नउचे कि कपड़ा दउची आउ गोटे कोन नउची जाको आमे कहबा ट्रांजैक्शन हेइ थाए हेतरे मनी इन्वॉल्व हेइ न थाए बस एक्सचेंज हेइ थाए ना आदर कौन बेनिफिट कौन भी सी कहवा कथा कि आदर सपोज हमको स्टील मिलगला यूटेंसिल मिलगला ताले से जो चिरा फटा कपड़ा बा देख चिरा फटा सब भी न था किसी लोक रिच क्लास अच्छा जो मैंने 2-4 दिन 5 थर 6 थर पढ़ले गोटे ड्रेस को जब पिंधिले तापर पिंधे नहीं तो सेगुड़ा कौन हम वेस्टेज हो जदि सेगुड़ा वेस्टेज है
ताले आमे पुणी एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हम भाव आमे गोटे सार्ट को सपोज पिंधिले फिंगिदेले ताले पुणी नुआ गोटे किणव अच्छा नुआटा जो किणव से कोठी ना कोठी गोटे तो प्रोडक्शन हम ना जिते से प्रोडक्शन होची से कार्बन डाइऑक्साइड पाखे आम कह एनवायरनमेंट को भी तो पल्यूशन करुच्ची तेणु जदि आम प्रोडक्शन कमेवाई चाहूच एनवायरनमेंट को जदि आम सस्टेनेबल करने चाहूचे सो दैट आम जे हाउस होल्ड सर्कुलर इकोनोमी टेक्सटाइल आनिबा कारण टेक्सटाइल होची वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑलमोस्ट आम कहबा 1 बिलियन टन्स ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट प्रत्येक वर्ष इंडिया प्रोड्यूस करुच्ची दिस इज वेरी important things almost a billion tons of what circular textile आम कहबा टेक्सटाइल वेस्ट इंडिया प्रोड्यूस करुच्ची ताकू जदि आम देखे जो लार्ज आम कह इंडिया हूँ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड ओबीसी टेक्सटाइल आम जो वेस्ट जी बाहरुची ताकू जदि आम देदेबा से भितरु किछि आम कहबा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होउची बा होनी से माने पॉल्यूशन रे कन्वर्ट हो जाउची बा पॉल्यूटेंट रे जदि आम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम 2019 रे इंट्रोड्यूस करतले कौन ना टेक्सटाइल फ्लैगशिप्स इनिशिएटिव ब्रिंगिंग अबाउट द सिंथेटिक चेंजेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर ताले देखो आमर जो यूएन रो एनवायरमेंटल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स अच्छी टेक्सटाइल फ्लैगशिप स्कीम जो थे से माने कहते कि टेक्सटाइल्स रो आमे केमिति कंजर्वेशन को कमेबा टेक्सटाइल गोटे फ्लैगशिप्स करेबा ता द्वारा वेस्ट गुड़ा जमती न जाऊ से सिंथेटिक फाइबर्स जी आसूची ताको आमे डबल यूज करिबा बा ताको यूज बा कमेबा तेणु आजिकल जो फैशन होउची ए फैशन रे आमे जदि कहबा से को रीयूज करिबा स्टार्ट करदवा गारमेंट केमिति रीयूज करिबा इको फ्रेंडली हेजबो भाव गोटे जिनस को जो आम बारंबार यूज करवा जो पर्यटन से पूरा खत्म हो जाए सो दैट आम कौन प्रोडक्शन कमिज जदि प्रोडक्शन को आम ताहले आम कहबा ग्लोबल वार्मिंग बा आम कहबा कि ये सब आमर कमे पारिबा हेल्दी हो पार एनवायरनमेंट को हेल्दी हो पार ओके सो सर्कुलर इकोनोमी जी जो टर्म्स अच्छी सर्कुलर इकोनोमी जदि आम डिस्कस करवा ये बहुत ही बढ़िया हो पार तेनाली टेक्सटाइल को आम रिसाइकल करवा बहुत जरूरी रिसाइकल करी कौन कर से तकिया कवर होगा पिलो कवर्स होगा किसी आम पोछा होगा डिफरेंट टाइप पोछा कलरफुल होगा से किसी हैंडलूम्स वर्क हो पार से आम इवन से जो मैंने सपोज रिच क्लास लोक मैंने गोटे शाढ़ी को थे दुईथर पिंधिकी देदेले ताकू पुणी आम कौन करवा ना ताकू कलरफुल करके रिसाइकल करके रूरल एरिया में बिकिदेवा ताकि सेम फैब्रिक रे जड़े सस्तार पाईगले फैब्रिक तो भल रु जड़े सस्तार भी पाईगले कहीं ऑलरेडी तार बेनिफिट्स उठे सो दैट आम कहबा कि एमिति से कहते कि तमिलनाडु बहुत जगह एमती आम कहबा अपसाइकल्स बा अपसाइकल्स क्लोथेस चली बट जदि ये आगु को आहरी अधिक चलो बा अधिक अधिक आम गारमेंट को यूज करवा जमती ये लिखाई मोस्टली आमर मोस्टली साड़ीज थाए है ना तो ये सब को कौन बैग रे कन्वर्ट होमती कपड़ार बैग होगला सपोज आम परिवा आने जाऊे सेमती बैग होगला किसी साड़ीज होगला तकिया कवर होगला कि आम कह जो बेड्स आमर कहवा कौन जो बेड कवर होगला कि एमती डिफरेंट कवर्स वगैरह होगला तो आपको जब आम करवा सो दैट आम जो मिलियंस टन्स ऑफ वेस्ट को आम कौन करवा रिसाइकल करिपरिबा है ना से माने जो लैंड फिलिंग रे यूज होची ये सब हो पार मतलब ताधर आम बंचाई पार एनवायरनमेंट को आम सस्टेनेबल कर पारिबा ओके तेणुक अपसाइक्लिंग आम कहबा जदि करुचे आम गारमेंट्स को बहुत बढ़िया रहो सो दैट इज द एसेंस बहुत बढ़िया एसेंस कही सो दैट आमर जो कार्बन फुटप्रिंट अच्छे आम रिड्यूस कर बिकज समस्ते जानिछ किए कहते ना कि डिबेट थाए कि व्हाट विल हैपेंस कि देखो आज दुनिया रे जदि आम देखा जो डिबेट विथ व्हाट आई वुड से कि डिबेट कौन ना आम समस्त कहे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट समस्त को भल एयर दरकार समस्त को कूल एयर दरकार समस्त को गछपत्र समस्त को पसंद बट कहीं लगेब ना कि एनवायरनमेंट कथा चिंता करेंगे ना बा कौन दिन कहीं स्वर उठेबे ना तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन सोसाइटी समस्ते चाहती बट कहीं करिया सपोज जड़े भाव जाऊँगी गोटे जो छोटिया गोटे आम कह किए गोटे रोड साइड दुकान देती से तार प्लास्टिक वेस्ट तादर बाहर से नाल पकई दूसरी तुम देखिल तो कहबनी ना न कहले केमती हम obviously so that is why this is the responsibilities of every citizen of this world this is not for India not for Odisha not for you and I so that is why one type of this circular economy को जदि हमें भी promote करूँ कहते हैं कि individual level रे जदि हमें changes आनिबा that would be the biggest change rather than the what imposing something on someone else it should comes from the heart
So let's hope कि this circular economy that could be circular textile ही परे, से circular plastic ही परे, circular iron ही परे, किसी भी ही परे. तो circular economy terms is gaining popularity. Okay, and आप क्वेश्चन तुम्हारा बनी परे, no doubt. So this is all about the circular textiles. बहुत बढ़िया आर्टिकल्स थिला. बाकी ये केजरीवाल अरेस्ट है देखो इथरे पॉलिटिकल मोटिवेटेड है ना, पॉलिटिकल मोटिवेटेड अर्थात इन द सेंस व्हाट करप्शन चार्जेस रे तांको अरेस्ट करा जाईची. तो से चार्जेस नाउ दिस इज अप टू द कोर्ट. तो यदि मतलब if that proves to be the what guilt, if he proves to be the guilty, he would be within the bar. Done. କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କହିବା ଯେମିତି ଏମାନେ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି. ତ ଦ୍ୟାଟ୍ would be ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେପୁଟି ଯେମିତି ସିସୋଦିଆ ଏ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ହଉ. ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ତୁମର ରହିବ. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट. सो आज आम करेन्ट अफेयर को डिस्कस करते इकोनोमिक्स पार्ट आम पर डिस्कस करदे आउ के. सो दैट इज हाउ कि बाकी आमर जी आम देखा खास किसी ना. हाँ जदि तुम देख आजिकल जो यूट्यूबर्स मैंने ये गोटे न्यूज अच्छी तुम देख यूट्यूबर्स मैंने आजिकल देख सेमती मिर्जा कथा नहीं ये सब यूट्यूबर्स आसिफ ये सब जो मैंने मतलब जो मैंने वाइल्ड लाइफ को लेकिन मांकड़ साप सब धरिकी वाइल्ड लाइफ को माने कमर्शियलाइज करने चेष्टा कर भद्रक डिविजन रो डीएफओस तांको पर चढ़ाऊ करूछंती बिकॉज दैट इज इलीगल अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. सेमती करिपरिबनी वाइल्ड लाइफ सहित तुम सेल्फी नहीं पारिब नहीं, वाइल्ड लाइफ रो फोटो उठेकी तुम वीडियो करी यूट्यूब रे वायरल करि परिबो नहीं. दीज आर रेस्ट्रिक्शन अछि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया. सो दैट इज व्हाई एंड दीज आर द आल्सो रेगुलेशन. तेणुकरी एथरु वंचित रहिबो तुम माने बिकॉज यू आर ऑल आर द अवेयर्ड सिटीजन्स. विथ दिस once again I will wish you a very happy Holi to all of you. Enjoy and celebrate the safe Holi and try to minimize the waste of water because that is very precious and samastongo janachi how the Bangalore is suffering for the water crisis. With this I will end the session. Thank you everyone. Have a good day to all.